everybody, welcome to Math Mastery by Planet Spark. All my 11th graders, we have already started with the first chapter, that is sets, right? अब करेंगे उसका next topic where we have equal sets, subsets and visual representation of the sets as well. Types हम कर चुके हैं and different forms हम कर चुके हैं. If you have missed the video everyone, go to the channel, just check the last video, everything is there. Watch it and then come back. Okay, so let's continue everyone. Two sets are called equal sets if they have exactly the same elements, irrespective of the order or repetition of elements. देखो जब भी हम set लिखते हैं उसके सारी elements unique होते हैं. That means even if repetition is there, तो जब हम set लिखते हैं repeated elements को वहाँ नहीं रखते. Just we put it there once. ओके सो रिपीटिशन नहीं होगी. दूसरी चीज ऑर्डर मैटर नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज अ सेट इन विच आई हैव एलिमेंट्स ए बी एंड सी. अनदर सेट इज देयर इन विच आई हैव एलिमेंट्स सी बी एंड ए. और सेम सेट को ही आई कैन राइट लाइक दिस और दिस. डजंट मैटर एज लॉन्ग एज सारे एलिमेंट्स वही हैं. तो ऑर्डर मैटर नहीं करता. ओके सो दो सेट्स को हम इक्वल कब कहेंगे? व्हेन दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे, राइट? एंड जो एलिमेंट्स हैं दे विल ऑल्सो बी सेम एग्जैक्टली. तो वी कैन से कॉपी होना चाहिए एक सेट दूसरे का, देन वी कैन से द सेट्स आर इक्वल, राइट एवरीबॉडी? ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. ऑल्सो इफ इट इज रिटन लाइक लेट्स से सी बी ए सी, C is there 2 times. तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है सेट की, इसे हम रिमूव कर देंगे. नाउ इट इज अ सेट. ओके एवरीवन. देन नेक्स्ट वन इज अ सबसेट. A set is a subset of another set, let's say set B, if every element of A is also an element of B. सबसेट का मतलब क्या है? उसी का एक पार्ट, राइट? अब पार्ट की अगर हम बात करें, लेट्स से ये एक सेट है, सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास. इसका सबसेट होगा इसका एक पार्ट जो इसके अंदर हो, राइट? इट कैन बी इक्वल टू द सेट ऑल्सो. सारे एलिमेंट्स भी उस सबसेट के अंदर हो सकते हैं, और एनी ऑफ द एलिमेंट्स दैट वी चूज देयर. सो हाउ कैन वी डिफाइन इट कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर एलिमेंट्स ऑफ ए ऑल्सो, राइट? देन वी कैन से बी इज अ सबसेट ऑफ ए. Okay, how do we write it? B is a subset of A. Okay, अब subset के लिए भी there are two representations, two ways that we write it. First one is this one, second one is this one. अब क्या difference है इसमें? This symbol means proper subset. प्रॉपर सबसेट मीन्स वो सेट के इक्वल कभी नहीं हो सकता, चाहे उससे एक एलिमेंट कम हो. देयर विल ऑलवेज बी लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन ए. यहाँ पे वी कैन से बी इज अ सबसेट ऑफ ए. हियर विल से बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. सबसेट ऑफ ए में हम दोनों पॉसिबिलिटीज लेते हैं. इट कैन बी प्रॉपर सबसेट ऑल्सो, राइट? इसके अंदर दो चीजें हैं, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए और बी कैन बी इक्वल टू ए ऑल्सो. इक्वालिटी भी हो सकती है. द सेट्स कैन बी इक्वल ऑल्सो, right? Every set is a subset of itself, right? Just like factors में करते थे कि every number is a factor of itself और one हर number का factor होगा ही, right? So दो factor fixed होते थे. Same way दो subset हमेशा fixed हैं. First of all, the set itself, it is a subset of itself. Subset, not a proper subset. Okay. दूसरी चीज empty set और null set is a subset of every set. कि हर सेट के अंदर एक खाली सेट तो है ही, that is a subset. Even for an empty set, right? For example 1 जब हम लेते हैं in the factors, तो 1 का factor itself बोलेंगे तो भी 1 है, and 1 is factor of every number then also. So just one factor is there. Similarly अगर हमारे पास एक empty set है तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? एक ही. इफ वी से द सेट इटसेल्फ देन आल्सो इट्स एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट इज अ फैक्टर, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, देन आल्सो वी से इट्स एम्प्टी सेट, राइट? सो नल सेट इज लाइक 1, the number 1 for the family of numbers. Okay everybody, so same way you can relate the factors and subsets there.
Okay, so the representations we have understood, proper subset and subset. So let's see the definition again. What are the keywords here? एक set को हम बोलेंगे subset of another set if every element of A is also an element of B. Then we call A is a subset of B. Empty set is a subset of every set. Empty set and the set itself, ये सबके subset होंगे ही होंगे. Proper subset है तो equality नहीं होगी, then we won't say the set itself is counting there, right? Otherwise set B होगा. Next one, a universal set. Universal set हम किसको बोलते हैं? Basically, it is the basic set containing all the elements under consideration in a particular context and all other sets are its subsets. तो अगर हम बात कर रहे हैं दो sets की, right? Let's say set A and set B. For a certain type of values, okay, एक particular context में we are saying this is set A, this is set B. So ये set A, set B जिस भी context में हम बात कर रहे हैं वहाँ पे all the elements where do they belong, that is known as universal set. For example, मैं बात कर रही हूँ, let's say in a class I have a set of students, those who study for 3 hours, and I have another set of students, those who play for 4 hours. राइट अब एक क्लास के स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, राइट. नाउ all the students of that class will give us the universal set, will comprise of the universal set. Okay, so same way कोई भी context अगर हम ले रहे हैं जहाँ पे सारे elements हों without any condition, given the conditions we get the sets, no condition is there, then all those values, all those elements will be a part of the universal set. तो जितने भी हम sets की बात करेंगे उन पे हम condition लगाते जाएंगे, they will all be subsets of this universal set. ठीक है, इस universal set का part होंगे because from that class we are selecting those students based on a particular condition, right? So they will all be subsets. So all the three things are clear everybody? Equality of sets, equal sets, then we have a subset and universal set. चलिए अब बात करते हैं visual representation की. We have understood two forms of set everybody. एक तो होता है list form, right? And one is when we mention the condition there. Right? That means we are talking about the set builder form and the roster form, right? ये दो forms हैं if we want to write it. Visually, Venn diagrams are used to represent the sets everybody. So we can say Venn diagrams are the graphical representation of sets using circles within a rectangle. रिप्रेजेंटेशन की जब बात आएगी तो सेट्स हमेशा सर्कुलर हम रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल से विल ओनली एंड ओनली रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट. ओके, showing the relationships like union, intersection and subsets. How? Let's just see. तो एक set होगा हमारे पास circle. Let's say this is set A. It is a part of a universal set that will represent using a rectangle. Okay. अब अगर हम union of two sets की बात करें, then this is set A, this is set B. So union would be all the elements combined together. So all this portion which is there in both the sets combined, that will be the union of two sets, A union B. Intersection का मतलब है common part. So again if we have two sets A and B, then this common portion represents the intersection of two sets. Subsets को कैसे हम represent करेंगे using the Venn diagrams? Let's say this is set A. Set B इसका एक subset है, that means इसका एक part है और some of the elements we are choosing there and keeping them in another set. So we can say here B is the subset of A because we can say all the elements of B here are elements of A as well, and these all are a part of universal set. तो universal set को हम represent करेंगे using a rectangle. All other sets will keep representing as circles. So the visual representation is clear everybody? This is union, this is intersection and this is how we represent the subset. चलिए अब आते हैं questions पे.
First of all, in the following set, state whether A equal to B or not. Equality we have to check. तो दो चीजें check करेंगे, number of elements same, सारे elements भी same. So exact copies होनी चाहिए of each other. So let's see. Except for the order. Order doesn't matter. Set A, we have 4 elements A, B, C and D. Then we have set B, 4 elements D, C, B and A. तो A है हमारे पास, B है, C is also there, D is also there. Order is different but exactly the same elements. So yes, A is equal to B. The two sets are equal. That's easy, right? Chaliye, next question. Which of the following are examples of null sets? Null set means empty set. और we can say वो set जिसमें कोई element ही नहीं है, एक ऐसी impossible condition हमें given है. Let's see. Set of odd natural numbers divisible by 2. Odd numbers which are divisible by 2. Is it possible everybody? Even numbers को हम define ही ऐसे करते हैं which are divisible by 2. Odd not divisible by 2. So can there be any odds which are divisible by 2? No. So we can say yes, the first one is an empty set, a null set. Second one, set of even prime numbers. Okay, prime numbers की अगर हम बात करें, most of the prime numbers, all except one, are odd. We have just one even prime, the only even prime, that is 2. तो इस set में एक element है, the only even prime number. So is this set empty? No. This is not an empty set, not a null set. एक element है तो भी it's not empty. Okay, next one. Insert the symbol subset और not a subset. देखो, belongs और subset में confuse नहीं होना है. This is the symbol belongs to a set. This is the symbol for subset. Does not belong is not a subset. Right? एक cross डाल देंगे. जब एक element और एक set की अगर हम बात करें, तो जो symbol है वो use होगा belongs to. ये इसमें belong करेगा. जब एक set और दूसरे set की बात करेंगे, then it will called as a subset of another set. यहाँ पे belongs to नहीं आएगा, right? So belongs to use होगा symbol के लिए, subset use होगा another set के लिए. तो यहाँ दो set given है हमें. First one is with the elements 2, 3 and 4. Second set है जिसमें elements हैं 1, 2, 3, 4 and 5. ये set इसका subset कब होगा? When all the elements of this set are elements of this set as well. So let's check. 2 यहाँ है in this set also. 3 is there. 4 is there. So we can say all the elements of A are in B. So I can say A is a subset of B. तो symbol आएगा yes, it is a subset. Proper subset, equality नहीं है, तो we can say A is a proper subset of B. Okay. Next question everyone. Which of the following sets are finite or infinite? कैसे define करेंगे? From the elements there. Finite number of elements हैं तो finite set. Infinite number of elements हैं अगर set में, that is an infinite set. So let's see. First one, the set of months of a year. How many months are there? If we try to list it, can we list all of them? Absolutely. We know the 12 months are there. January, February up till December. 12 elements are there in the set. So is it a finite set? Absolutely. Finite set. Second one, the set of positive integers greater than 100. 100 से बड़े सारे positive integers, right? So 101, 102, 103 and so on. कितने होंगे? Infinitely many. So इस set में infinite number of elements है. So we can say that is an infinite set. Okay, so based on number of elements, we can classify them as finite or infinite. Next one. Let A be a set in which we have elements. Okay, interesting set given. ध्यान दो अब यहाँ पे. In A we have 1, 2. Then another set is there. 3 and 4 are there in that set. And 5 is there. तो बताओ A में कितने elements हैं? Tell me in the comments everybody. Yes. Elements हम कैसे देखेंगे?
We'll just see how many elements are there uniquely, right? First one is 1, then 2, then this set. ये पूरा set एक element है, इसके elements अंदर नहीं है इसके, right? They are in that set. So they are a part of this set, not directly A. And then 5. So 1, 2, 3 and 4. 4 elements are there in set A. Right? So let's say हम इसे कुछ नाम दे देते हैं this set separately. Let's say this is set B, in which we have elements 3 and 4. So we can rewrite our given set as 1, 2, B and 5. Better form? Okay. Now which of the following elements are incorrect and why? Statements हमें check करनी है. अब देखो ये जो है 3,4 ये क्या है? सेट B है, राइट? अब सेट B इसका एक एलिमेंट है यहाँ पे, इट्स नॉट अ सबसेट. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. डायरेक्टली ये एलिमेंट उठा के मैं यहाँ रख रही हूँ, लेट्स से 3,4. तो ये एक एलिमेंट है, तो इट विल बिलोंग टू सेट A, नॉट अ सबसेट. इसको सबसेट होने के लिए एक सेट में डालना पड़ेगा इस एलिमेंट को. दिस इज एन एलिमेंट, इसको एक सेट में अगर मैं डाल दूँ, this set inside a set, then it will become a subset of A. So can I directly say 3,4 is a subset of A? No. It is an element of A. So symbol would be belongs to. So can I say 3,4 this set belongs to A? Yes. Because ये इसका क्या है? एक element. Okay, so be careful when we have a set inside a set. तो ये उसका एक element है, not a subset. To be a subset, इसको एक और set में डालना पड़ेगा. Then we say it is a subset. Understood the difference, everybody? Okay, then चलिए next one. Okay, that was all. Let's quickly summarize what we learned here. Two sets are equal when they contain exactly the same elements regardless of order or repetition. Okay. Then subset हमने पढ़ा. Subset कब बोलते हैं हम? When all the elements of a set belong to the other set, then we say it is a subset. और null set और empty set होगा हर set का subset. And universal set is the set that will contain all the elements that we are talking about in a certain context. Venn diagrams को लेके we can visually represent the sets using circles, और universal set हम represent करेंगे using rectangles. So that was all for today, everybody. In the next video, we'll be completing the chapter with operations on set, right? Last thing here, a quick reminder for all of you for your free trial class, everybody. Yes, the trial class is absolutely free now. In the description, you can find the link. बस उस पे click करना है and 2 easy steps. पहले you'll see this window, you can select your grade there, click करना है and put your phone number, that's it. Okay, सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी ऑन योर नंबर, द लिंक एंड एवरीथिंग, टेक्स्ट मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, एट बोथ द प्लेसेस. यू जस्ट हैव टू जॉइन देयर एंड यू विल गेट योर फ्री क्लास. थैंक यू एवरीवन. आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम.